So students, let's move on to the next set of sums which are a bit higher level. Okay, so you can observe that there is a solenoid जिसके 200 turns per centimeter. So you know small n is for turns per meter. So ये n का value है small n and I've written it. अब सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर में करना पड़ेगा. So that is 10 raised to minus 2. Okay, and this can be written as 200 into 10 raised to plus 2 turns per meter. Next, you can observe current 1.4 ampere. I have written it. उसका diameter solenoid का 3 centimeter. I have written it. अब इसमें से radius मिल जाएगा हमको, which is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter. ठीक है? Then there is a coil C जिसके turns है 100. Clear? And current in the solenoid इनिशियली जो था ओके 1.4 से 0 कर दिया इन 20 मिलीसेकंड. सो ये टाइम हो गया 20 मिलीसेकंड. मिलीसेकंड को भी सेकंड में कर दिया. ओके, एंड टर्न्स कॉइल का कैपिटल एन से डिनोट किया बिकॉज़ दैट इज टोटल टर्न्स. करेक्ट, उसमें कोई पर सेंटीमीटर पर मीटर नहीं दिया. सो कैपिटल एन इज फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. व्हाट दे हैव आस्क्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ. ओके, सो how we are going to proceed with this. मैं रिवर्स प्रोसेस चालू करता हूं. सी व्हाट विल बी आवर लास्ट पार्ट. ईएमएफ का फार्मूला आपको पता है. इट इज गोइंग टू बी d phi by dt. करेक्ट, एंड टर्न्स है कॉइल में, सो कॉइल के टर्न्स लेने पड़ेंगे. आई होप यू गॉट दिस फार्मूला. सो अगर ईएमएफ फाइंड करना है तो ये सारे वैल्यूज होने चाहिए. सो गिवन देके समझ जाएगा. कैपिटल N 100, dt is also given. We are not having d phi. d phi is change in flux. Correct. Initial flux ये करंट की वजह से है. फाइनल फ्लक्स क्या होगा? 0. Why? करंट 0, फ्लक्स 0. But this, so first step आपका ये होगा कि इनिशियल फ्लक्स फाइंड करो. So इनिशियल फ्लक्स मतलब phi1 कैसे मिलेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, b into a. करेक्ट, b into a. नाउ ये मैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से आएगा? सोलेनॉइड की वजह से. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला we have studied in this chapter also as well as in magnetic field of electric current. It is mu naught Ni, okay, into a will be written as pi r square. But this, अब इसमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है. सो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 pi, ठीक है, into 10 raised to minus 7. Then n is 200 into 10 raised to 2. Then I is given 1.4. Quite lengthy it is going. Okay. Again pi 3.142 into r value 1.5 into 10 raised to minus 2 the whole square. So lengthy calculation, and you will definitely require log table for doing this. Okay. And the answer that you will get is, I am telling you a rough answer. Answer may differ. किसी के लास्ट दो डिजिट चेंज हो सकते हैं. सो यू विल गेट समथिंग अराउंड 2.486 into 10 raised to minus 5 Weber. But this, now you know d phi by dt. Second step. This was your first step. Now second step is phi2 minus phi1. Correct or not? This is your final, जिसका वैल्यू 0 होने वाला है. And phi1 is your initial, जो यही वैल्यू रहेगा 2.486 into 10 raised to minus 5. So d phi का वैल्यू ये है, आपको मिल गया. Okay, then you will substitute this in this equation and you will get the final answer. But this negative sign का फिकर मत करो. Negative sign we are not going to consider. We will just consider the magnitude. Okay, so E का भी मैं आपको एक final answer बता देता हूँ, which will come around, the value of this will come 124.3 into 10 raised to minus 3 volt. Okay, and in physics we have a habit to give decimal after first digit. So इसको आप shift करोगे, so this will become 1.243 into 10 raised to minus 1, or 0.1243 can also be written. ठीक है.
so this is how the sum is done. So students, let's proceed for one more sum. You can observe the diagram is given in the question. This is a part of a generator, ठीक है? North pole, south pole, बीच में एक coil है, rectangular coil, and ये घूम रहा है, okay? So their rotation is shown over here at point A and B, ठीक है? उसका connection end में P और Q के साथ है, ठीक है? So length of this coil is 10 centimeter. So I can write L is equal to 10, and उसका जो rotation है, उसका जो रेडियस है वो वैल्यू है ये, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या लिखा है? आर्मेचर है जनरेटर का ABCD एंड 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है. सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू 1500 आरपीएम is nothing but small n. Now I told you small n is number of turns per unit length in case of solenoid, but here it is revolution per minute. Okay, frequency ओमेगा में यूज होता है 2 pi n. Okay, so इधर ये frequency का काम कर रहा है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है which is 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, SI यूनिट में है. Now EMF they have asked you to find. So कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे EMF का? In this case B है, लेंथ है. Okay, so I hope you understand. Here this time we are going to use BLV, but एक ही चीज नहीं है अपने पास which is V. So इस बार हम सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. Hence I think that this sum was difficult कि बहुत लोग को क्लिक ही नहीं होगा वेलोसिटी कैसे फाइंड करना. So we have studied R omega, correct? Now R we know it is 4 into 10 raised to minus 2. Omega is 2 into pi into n. Okay, 2 pi n. N value is this, but I have always told you इसको करने का RPS divided by 60. Then only you can use it over here. So this is how you will get the value of velocity, which I think should come around 6.28. 2 pi जितना value आएगा. See, 4 ones are 4 15s are. Okay, 15 cancel. This is 10 raised to 2. Got this? And this is 10 raised to minus 2. So आपके पास सिर्फ 2 pi बचता है, which is 6.284 मीटर पर सेकेंड. Then let's come to this part. ये आपका सेकेंड स्टेप होगा. B का वैल्यू है 0.5, L का वैल्यू है 10 into 10 raised to minus 2 into this 6.284. I hope I can write it as 2 pi. 2 pi रहने दो. 0.5 half. So ये हो गया half. This got cancelled. So आपके पास बचता है 10 pi. 10 into pi, that is 31.42 into 10 raised to minus 2. ठीक है? And this is in volt. Clear with this? So this is the last answer. So students, we are going for a topic of toroid. उसमें self inductance find करना है. In one of the theory lecture हमने self inductance for solenoid find किया था. Okay, so on similar lines we are going to find the expression for self inductance of a toroid, and then numerical values है उसको solve करेंगे. So how we are going to do this? First of all हमको find करना पड़ेगा EMF. Got this? EMF मतलब flux find करना पड़ेगा. तो flux that is B into A, correct? So ultimately capital B लगेगा for toroid. अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ चुके हैं, इट हैज अ फॉर्मूला NI सेम एज सोलेनोइड, बट डिफरेंस क्या है? हियर स्मॉल n इज कैपिटल N डिवाइड बाय 2 pi r. यहां लेंथ के बदले 2 pi r आता है. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली कैपिटल R, द रेडियस ऑफ दैट toroid region. Okay, and now I can find the value of phi, which is equal to B into A. Okay, so B का value तो है this. Now here I need cross section area of toroid. Okay, cross section मतलब सिर्फ toroid का radius चाहिए. That is our small r. देखो circular cross section of radius r. Okay, so यहाँ पर आएगा
pi small r square, ये हमको मिल गया phi का वैल्यू. Now we know E is equal to d phi by dt. Got this? With number of turns total capital N. Got this? And if you want to consider a negative sign, we can consider. ठीक है? But magnitude is solve करते हैं. So N into d by dt. Phi value I'll write this completely, mu naught n I pi r square divided by 2 pi r. Here pi can get cancelled. अब next step क्या है? सिर्फ डेरिवेटिव करंट का होगा di by dt. Okay, rest all terms will come out. So n square mu naught, then we have r square, then here we have 2r, and this di by dt. Got this? Now इंडक्टेंस चाहिए, so हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E is equal to L di by dt. अगेन इसमें भी एक नेगेटिव साइन होता है, इग्नोर कर सकते हो जैसे इधर इग्नोर किया है. ओके, so that is how what I will do is LHS here also E, here also E, so I can equate this RHS also, correct? So E का वैल्यू इधर से उठा लो, that is n square mu naught r square di by dt divided by 2r is equal to L di by dt. This whole term got cancelled, so that is how आपको L का फॉर्मूला मिल गया, mu naught n square r square divided by 2r. Okay, so this is the expression. Now the next part is only substitution. Like small r का वैल्यू दिया हुआ है 2 cm, capital R का वैल्यू दिया है 15 cm. Mu naught, you know it is 4 pi into 10 raised to minus 7, and capital N is given as 1200. So when you substitute all these values, you will get the answer as 2.41 into 10 raised to minus 3 Henry. This might change. Decimal के बाद के digits थोड़े differ कर सकते हैं आपके आंसर से, and calculation is quite lengthy, so that cannot be solved right now. Just formula substitution. So let's take one more sum related to toroid. This is from your exercise, okay? And I get that formula as it is for inductance. It will be used in this sum also. First of all, let's understand the toroid ka length hai 1 meter. So I'll write L as 1 meter. Then diameter is 1 centimeter. ये cross section diameter है, okay, toroid का. So this will be denoted by small d, and from this हमको radius मिल सकता है small r, which is 0.5. Okay, centimeter को meter में कर दो. Then it is slightly wound with 100 turns per centimeter. See, 100 turns per centimeter. So this is your small n, 100 per centimeter. So इसको meter में करना पड़ेगा. So that is how you know it is 10 raised to minus 2. So numerator में जाएगा तो plus 2 turns per meter. Got this? Now toroid भी एक ही मीटर का बना हुआ है. So small n या capital N in this case is the same. I hope you understood this. Toroid भी एक ही मीटर का लेंथ है. So यही आपका total turns भी हो जाता है. Okay? I can write here as capital N. Next part is magnetic field calculate करना है. Okay? B, when current through the turns is 100 ampere. So current का value दिया हुआ है 100 ampere. So they have asked you to find capital V, as well as they have asked you to calculate the inductance. Okay? Now toroid के केस में हमको पता है फॉर्मूला क्या यूज करते हैं. It is mu naught n into I. Small n into I. This is the formula for B. Correct? So you can substitute the values, and it is 4 into 3.142 into 10 raised to minus 7. ये हो गया mu naught का value. Small n value, I hope I can write it as 10 raised to 4. ठीक है? And current is 10 raised to 2, 100. So this is like 12.56. 4 pi is 12.56. ये वैल्यू याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. And here पावर को सॉल्व करोगे तो 10 raised to minus 1 आएगा.
So that is how we get answer as 1.256 Tesla. Okay, first part is quite easy. अब second part the formula you can directly use this. I'll just substitute the values. So again u naught 4 into 3.142 into 10 raised to minus 7 लिख दिया. Capital N this part, so 10 raised to 4 the whole square into small r this part 0.5 into 10 raised to minus 2 the whole square cube, sorry, it will come as square divided by 2 into capital R. Now this is the interesting part. Capital R is the radius of that toroid. ओके, सो आई होप आप समझ जाओ कि एक मेरे पास लेंथ है बार का, ठीक है, यहाँ देखो टोरॉइड बार में से बना हुआ है, तो आई हैव अ बार एंड उसको मैंने पूरा बेंड करके सर्कल में बनाया. ओके, अ बार इज मेड इनटू अ सर्कल, सो दैट लेंथ will actually become the circumference of toroid, so I will write as 2 pi r. ठीक है, सो इसमें से आपको r का वैल्यू मिलता है l upon 2 pi. Got this? So here you will be writing l divided by 2 pi. ठीक है, this 2 will get cancelled, l का value 1 meter and this pi will go in numerator, इसके साथ multiply होगा. Now pi square, let me tell you, it is roughly taken as 10. Exact value 9.87 है, but it is roughly taken as 10. So textbook का answer 10 दिया हुआ है. When you solve this, only pi square will be left with some powers. So that is how this will come as 10 into 10 raised to minus 3 Henry. Clear? Or I told you exact answer is actually 9.87 into 10 raised to minus 3 Henry. Got this? So this is your final answer. So students, now we are moving for solenoid. Okay, inductance in case of solenoid. So solenoid का तो straight away formula है. आप वीडियो लेक्चर देख लो जिसमें मैंने सेल्फ इंडक्शन कवर किया है, उसमें इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कवर हो चुका है. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व that n turns capital N, find the inductance of solenoid. So पहले डेरिवेशन करना चाहिए. ओके, सो वो तो हम कर चुके हैं. इंडक्टेंस का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर mu naught n square L into A. ओके, बट अगर आप वैल्यूज देखो तो कैपिटल N दिया, हमको स्मॉल n नहीं चाहिए. So we know small n is actually n upon n the whole square. Okay, small n का फॉर्मूला डाल दिया. So this will give you mu naught n square L square L into A. This term got cancelled. So आप ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हो. Okay, rest all things are substitution. You can observe mu naught का वैल्यू पता है आपको, n 200, L 20 मीटर में करना, एरिया 5. That also you are supposed to convert it into meter square. ठीक है, 10 raised to minus 4 आएगा. So that is how L का आंसर तो आपको मिल जाएगा. And it will come something around 12.568 into 10 raised to minus 5. This fifth digit is not required. 12.56 is enough. Okay, Henry. Second part, if you observe EMF induced, they have asked you to calculate EMF induced. तो हमको ये फॉर्मूला पता है, L का वैल्यू मिल चुका है, and they have given current decreases at the rate of 60 ampere per second. So ये किसका वैल्यू है? This is the value of directly dI by dt. यूनिट से भी समझ में आता है, एम्पियर करंट डिवाइड बाय टाइम सेकंड. करेक्ट? So 12.56 into 10 raised to minus 5 into 60, and when you solve this you will get an answer something around 7.536 into 10 raised to minus 3 volt. Got this? ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम. करेक्ट? मोबाइल को वायर लगाने की जरूरत ही नहीं, आप एक पर्टिकुलर डिस्क पे प्लेस कर देते हो मोबाइल एंड वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है. नो वायर्स कनेक्टेड टू द मोबाइल.
So ये कैसे काम करता है? It is based on the concept of mutual inductance. So what is there in that system? There is one base, वो एक coil है, base coil. There is another coil, handle coil. Handle coil पे usually आप mobile place करते हो. Okay? So base coil का length, turns, current, area. अभी करंट कौन सा है? बेस कॉइल को करंट पास करना पड़ता है. ओके, एंड दैट करंट इज लिंक्ड टू द हैंडल कॉइल. अब कैसे? विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस कॉइल में करंट आ गया तो फ्लक्स क्रिएट होगा आजू बाजू के रीजन में. बाजू वाले रीजन में क्या होगा? हैंडल. सो फ्लक्स हैंडल में आ जाएगा. ओके, एंड दैट इज हाउ उधर कहीं ना कहीं करंट जनरेट होगा. करेक्ट, इंड्यूस होगा. ओके, म्यूचुअली इंडक्ट होगा एंड उधर आप मोबाइल रख देते हो. सो हैंडल से मोबाइल में चार्जिंग हो जाएगा. गॉट दिस? सो इन दिस सम एक्चुअली हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है. दिस विल बी द लास्ट आंसर दैट वी विल गेट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बेस कॉइल. ठीक है, सो यहां पर मैं बेस लिख देता हूं. सो वो एक सोलेनॉइड ही है. करेक्ट. So this will have a formula mu naught n I. ठीक है, अब n का फॉर्मूला आपको पता है, it is capital N divided by L. करेक्ट. यहाँ पर बेस का करंट आएगा एंड इधर टर्न्स भी बेस के आएंगे. क्लियर? नाउ we will find flux. ओके, लिंक विद द बेस. बेस की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है, so we know the formula B into A. करेक्ट. सो बेस का वैल्यू आया है म्यू नॉट एन बी आई बी अपॉन एल इनटू ए. व्हाट इज नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट. करेक्ट और नॉट? सो ये फ्लक्स किसमें लिंक हुआ है? दिस फ्लक्स इज लिंक्ड इन द हैंडल कॉइल. करेक्ट. तो यहाँ पर हैंडल मतलब इसको आप बेस भी ले सकते हो, which is going into handle. So अगर आप हैंडल लिखते then also it was not wrong. Okay, but current कौन सा है? बेस में से आया है. Okay, so here I will write IB. Got this? And we need to consider the turns of the handle also. Correct or not? क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो एक टर्न में थोड़ी हैंडल में जाएगा. It will be linked to all the turns. So यहाँ पर NH will also come. What is ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के टॉपिक में आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. सो NH into phi of base I can write mu naught NB IB into A and this divided by IB into N. I hope you got this. This is the value of flux in base. ठीक है. So IB cancel हो गया. Whatever part left out you can check mu naught NB NH area and then the length. So this is how we get the answer of mutual inductance. So students, similar sum I am taking from your exercise. इससे previous sum जो किया linked है and वो भी और अच्छे से समझ जाएगा when you solve numericals related to each other a lot. Okay. So you can observe कि solenoid है, length L, cross section A, N1 turns, primary coil. यही previous sum में base coil था. Correct? NB से denote किया था. Then एक और coil है handle coil. Correct? जिसका turns N2. उधर NH दिया हुआ था. Got this? And bound about its center and mutual inductance find करने का है. So same way we will proceed. B magnetic induction due to primary coil क्या रहेगा फॉर्मूला? mu naught n into I. करेक्ट, बिकॉज सोलेनॉइड है. अभी स्मॉल n के बदले आप क्या लिख दोगे? कैपिटल N अपॉन N. गॉट दिस? एंड हियर आई विल राइट N1 प्राइमरी कॉइल. नाउ यू नो जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पे आएगा वो प्राइमरी की वजह से ही आने वाला है. करेक्ट और नॉट? सो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? B into A flux in coming in secondary due to magnetic induction of primary. Okay, तो यहाँ पर आप सेकेंडरी भी लिख सकते हो. इन प्रीवियस केस जैसे मैंने बेस लिखा था वैसे आप इधर हैंडल भी लिख सकते हो. ओके, सो B का फॉर्मूला mu naught N1 into I
divided by L and area will remain as it is. ठीक है, flux हो गया. Now we know mutual inductance is equal to flux in secondary divided by current in primary. Correct? So if you want, you can write primary also over here for avoiding less confusion. Okay? अब secondary coil के भी कुछ terms हैं N2, so वो सारे terms में mutual induction होगा. तो यहाँ पर N2 आएगा. Let's substitute the values. N2 into 5 का value mu naught N1 IP into A divided by L. Okay, so I forgot this IP here. Clear? So IP got cancelled. What you are left with? Mu naught. Okay, and this will be 1. I have written I. It will be N1 मतलब base का. So यहाँ पर base के बदले 1 आ जाएगा. N2 handle का. So यहाँ handle के बदले 2 आ जाएगा. Then area and then this length. So I hope you understood that it is quite related sum. सिर्फ base के बदले N1 आएगा और handle के बदले N2 आएगा. And this is how the answer comes. Got this? So this were all the numericals related to chapter electromagnetic induction, and finally this chapter is done with theory as well as with numericals. Thank you.